Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics from the platform of Ikra Hufaz Girls Secondary School. As all of you know, that government has announced the holidays due to the intensive situation of pandemic in the country. So that's why we had to start the online class, and this is the stage 2 in which we are going to deliver those chapters which are not given in the class during the class, that is जब आप स्कूल आ रहे थे तब आपने जो कुछ भी सिलेबस कवर किया उसके बाद से जो है हम ऑनलाइन क्लास में आपको चैप्टर्स कवर करवाएंगे. सो यू हैव कवर्ड 7 chapters so far. Now today we are going to start chapter number 8. The name of the chapter is Work, Power and Energy. So let's start with the first topic, that is work. Work. एक आम इंसान, एक लेमैन क्या कहते हैं? काम. Okay? But in physics, that in terminology of physics, the work is like little bit different and it is not used in the ordinary sense in physics. However, it is used in a restricted manner and the careful manner, in a sense that if a person is lifting an object from floor to roof, एक बंदा, एक इंसान या कोई भी इंसान कोई भी वज़न उठाता है, ज़मीन से लेके छत तक लेके जाता है या फिर एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करवाता है, तो हम क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि उस इंसान ने उस ऑब्जेक्ट पे जिसको वो मूव करना चाह रहा है, जिसको वो उठाना चाह रहा है, जिसको वो लिफ्ट करना चाह रहा है, लिफ्ट करके मतलब कि ज़मीन से ऊपर लेके जाना चाह रहा है या किसी जगह उठाकर रखना चाह रहा है, तो उस वक्त वो इंसान उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है. क्या लगाता है? फोर्स. और इस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके मूव करती हुई नजर आती है. मतलब कि हमारे फोर्स लगाने से या उस इंसान के फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्या कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स के कोई डिस्टेंस कवर करता है. और वो डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट ऑफ द डायरेक्शन. ओके, so when the person lifts the object or move the object from one place to another, and by applying the force it displays that body in a specific direction. So in terms of physics we can say the person has done the work. उस इंसान ने क्या कर दिया? काम कर लिया. ठीक है, किस तरह से? जब उसने फोर्स लगाई, अपनी तवानाई लगाई और ताकत लगाकर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह तक क्या कर दिया? हरकत दे दिया. तो उस वक्त उसने क्या कर लिया? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्या कर लिया? काम, वर्क किया. ओके, और फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में जब मैथमेटिकली इस वर्क को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क. कैसे? फोर्स अप्लाई की गई, यकीन तो किसी न किसी डायरेक्शन में अप्लाई की गई होगी, और फिर डिस्प्लेसमेंट हुई. क्या हुई? डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने. किस डायरेक्शन में? किसी न किसी डायरेक्शन में. और डायरेक्शन क्या है? फोर्स की अगर डायरेक्शन है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, यकीनी तौर पर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी ना, यकीन तौर पर मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी ऑब्जेक्ट की. तो the product of applied force and the distance moved by an object in the direction of the force is called the work. Okay girls, now here you can see the formula as well on the board, that is the product of force and displacement is called the work. Okay, and if the force is applied in any direction, then we cannot ignore the theta, and this theta is the angle which is formed by the force in the direction of
मोशन। फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स अप्लाई होके क्या हो रही है, किसी न किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि जरूरत नहीं है कि फोर्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही अप्लाई हो रही हो, जैसे कि राइट एंगल में जरूरी नहीं है कि फोर्स जो है वो हर दफा जो है वो सीधी सीधी अप्लाई हो रही हो, कि जैसे कि आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो। कभी कभी तो थीटा भी तो बन सकता है ना फोर्स का, जैसे कि आप ट्रॉलीज मूव कर रहे होते हैं, कभी शॉपिंग मॉल पे गए हो आप, तो वहां पे परचेसिंग के दौरान आप ट्रॉली मूव करते हैं, तो ट्रॉली मूव कर रहे होते हैं तो आपकी फोर्स जो है किसी न किसी डायरेक्शन पे लग रही होती है, मतलब किसी न किसी एंगल पे लग रही होती है, और मूव कर रहा ऑब्जेक्ट मतलब ट्रॉली मूव कर रही होती है हॉरिजॉन्टली। ऐसा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होती है ट्रॉली की और आप फोर्स लगा रहे होते हैं किस पे, ट्रॉली पे। तो जब ट्रॉली मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली और आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि क्या होता है, थीटा बन रहा होता है फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, सही है ना। सो दैट इज कॉल्ड द थीटा। सो द अनदर फॉर्मूला फॉर द वर्क इज FD cos थीटा। मीन्स हम थीटा को जो कि एंगल है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज when the theta is there and definitely the theta is between the force and the displacement। जो फोर्स अप्लाई की जा रही है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनके दरमियान का जो है वो थीटा है। सो the formula will become W is equals to FD cos theta। अच्छा, one more thing, why we have written here cos theta? As all of you remember, or as all of you have learned in your previous chapter, chapter number 5, about scalars and vectors, there you have studied about the trigonometric ratios. That is the ratio which is formed, different ratios are there, different ratios of different sides are of a right angle triangle is denoted by the terminology that is trigonometric ratio। Remember, याद आ रहा है? So at that time you have learned one of the ratio between the base and hypotenuse, and the ratio between the base and hypotenuse is called the cos theta। Remember, याद है? The ratio between the base and the hypotenuse is called the cos theta। Now here you can see in the figure, this D is on the horizontal axis, so it is the base, and this is what? This is the hypotenuse. How comes? If we draw a line if we draw a line here, so it would become the right angle। होगा कि नहीं? सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ, सो यहाँ पे राइट एंगल जगह, और राइट एंगल के सामने जो आपका साइड होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। सो द रेशियो बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड द cos थीटा। सो दैट्स व्हाई इन फॉर्मूला ऑफ वर्क वी हैव रिटन W is equals to FD cos theta। Got the point? Now, since when in everyday example we have also seen some of the examples, just as a lady pushing the pram, okay, or pulling the pram, and definitely she pushes the pram को push कर रहे होते हैं आगे की तरफ, तो तब भी आप यहाँ क्या देख रहे होते हैं, तब भी बिल्कुल ट्रॉली वाली एग्जाम्पल हो गई जिसमें थीटा बन रहा होता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप देखते हैं कि अगर कोई इंसान ये जो अगर आप जब व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं या आप दीवार पे कोई बंदा अगर पुश करने की कोशिश करेगा तो क्या दीवार हिल जाएगी? जी नहीं, दीवार जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी। ऑल्दो द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई हो रही है, मगर क्या है, फोर्स इज देयर बट इट इज ऑन एंड और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में चाहिए, कि अगर आप दीवार इस व्हाइट बोर्ड पे अगर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट यूँ चाहिए, और फोर्स जो है वो क्या है, वो यूँ अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आप कह सकते हैं कि एंगल जो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब ऐसा केस बन जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो एट दैट टाइम जीरो वर्क विल टेक प्लेस। Zero work will take place, the work is not going to happen, वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपने कभी देखा हो कि कभी आपको कोई बहुत ही हैवी चीज़ मूव करनी हो, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे दीवार, आपको जो दीवार नहीं बल्कि आपको दीवार के साथ खड़ी अलमारी खिसकानी है, तो आप क्या करेंगे, यकीन तौर पर जो है वो देखा होगा हम तो घर पे एग्जाम्पल में कि बैठ के धक्का दे रहे होते हैं। क्यों? कि ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लग जाए ताकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मीन्स फॉर अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। सो क्या होता है कि एट दैट टाइम द
theta, that is the angle between the force and displacement, is 0, and at that time the maximum positive work can be visualized. पॉजिटिव वर्क भी दिखेगा और मैक्सिमम वर्क दिखता है उस टाइम पे जब इंसान को किसी हैवी चीज़ को खिसकाना होता है। उस सूरत में जो है वो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए और थीटा अगर इन दोनों के दरमियान एंगल, मतलब कि इन दोनों के दरमियान अगर 0 हो जाए, थीटा से मुराद एंगल हो गया, सो एट दैट टाइम द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है ना। मगर अगर देखिए, अगर मिसाल के तौर पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें इस डायरेक्शन में, तो क्या वर्क होगा? जी नहीं। वर्क विल बी नेगेटिव व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मीन्स के अब आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो, ये एग्जाम्पल आपको सामने नजर आ रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, तो एट दैट टाइम द थीटा इज 180 डिग्री बिटवीन दीज टू, एंड व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन नेगेटिव वर्क विल बी डन, मीन्स के नो वर्क विल बी डन। ओके, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या काम होगा? जी नहीं। अच्छा, अब आपको मैं इसकी एग्जांपल तो वैसे ही पहले बता चुकी है 90 डिग्रीज की, कि किसी को अगर दीवार को पुश करने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ ही समझ लीजिए कि कुर्सी या कोई चीज़ भी आपने खिसकानी है, ट्रॉली खिसकानी है और ट्रॉली के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल यूँ ऐसे, ठीक है ना, फोर्स वर्टिकल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट चाहिए यूँ, तो क्या फोर्स यूँ लगाएंगे आप ऊपर से नीचे की तरफ, क्या फोर्स प्रेशर लगाएंगे आप हैंडल पे ट्रॉली के, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? जी नहीं। आपको पता है कि जब फोर्स आप यूँ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट यूँ चाहिए, तो कभी भी आपकी ट्रॉली या कोई भी चीज़ ऐसी जो मूव करना चाह रहे मूव नहीं होगी, है ना। और अगर आप उसको अगर थीटा लगा लेंगे, मीन्स कि अगर आपको ट्रॉली यूँ मूव करनी है और आप फोर्स यूँ लगा लेंगे, तो फिर ट्रॉली मूव भी करेगी, मीन्स कि कुछ ना कुछ थीटा बन गया, एंगल बन गया, है कि नहीं। सो द पॉजिटिव वर्क इज देयर when the angle between the force and displacement is 0. The negative work will be there when the angle between the force and displacement is 180 degree, and no work will be done, zero work when the angle between the force and displacement is 90 degrees. Okay, when the force and displacement are at 90 degree to each other, then no work will be done. Okay, so I think it's clear to this point. Now let's discuss the unit of the work. The unit of the SI unit of work. यूनिट क्या है? आपको SI यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारा जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारे यूनिट्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो सकते हैं, वो उनमें जो वर्क का यूनिट है वो क्या है? जूल है। और जूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? If the force of 1 Newton is applied to displace a body by 1 meter, then the work done is 1 joules. Okay, I repeat, अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी को मूव करने के लिए, और कितना मूव करने के लिए कि वो 1 मीटर के करीब जो है डिस्प्लेस हो जाए, सो एट दैट टाइम द वर्क इज मेजर्ड इन 1 joules. Okay, got the point? I think it's clear to this point. And now I must give you the homework for the day today. Your homework of the day is you have to learn the definition of work. Inshallah, you will get the PDF of these notes as well. But right now, you can learn the definition from the book as well. Okay, so that's all for the day today. And by the end of the class, I must show you one of the figure of the lady who is pushing the pram and the man who is pushing the wall, so that you can get the clear idea, and then we will wind up our topic. Okay. Yes, students, here I want to show you the example of a lady who is pushing a pram. Okay, so definitely she is making certain angle. You can see here, so there is certain angle between the application of force and the displacement. Okay, she requires the displacement in this direction and the application of force in this direction. Okay, you can see here there is an angle, certain angle. Okay, so the angle is there between the application of force and the displacement. So the lady is successful in pushing a pram towards certain direction, towards a specific direction. Here it is mentioned eastward. It means displacement is taking place on application of force and work is going to happen. Okay, and similarly here you can see a boy, a person, a man. What he is doing? He is trying to push a wall which is stationary.
okay, which is not moving at all, okay, which is not moving at all. So at that time what happens? So here he is constantly applying the force in this direction, but and this, he also requires the displacement in this direction, okay. But since one of the factor here it is 0, like force is, he is applying all the time force, but the displacement is not occurring to take place, displacement nahi ho raha. So that's why the product between the force and displacement becomes 0. Kyun? Because displacement, no displacement takes place, although he is putting all his forces and efforts to move the stationary wall, but definitely he is not going to be successful. So at that time also the work is 0, means that the direction of the force and the direction of the displacement is the same. But what happened? The force is applied on the stationary object, so definitely the movement will not take place, and when the movement will not take place, so at that time what happened? The work will be 0, okay. And similarly, when the force is applied in this direction, अगर vertically अगर force apply की जाए यूं या ऐसे, और displacement अगर हमें यूं चाहिए हो, मतलब movement अगर हमें यूं चाहिए होगी, तो फिर उस समय क्या होगा? उस समय क्या हो जाएगा? उस समय ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 डिग्रीज का, ओके। जब एंगल इन दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का हो जाएगा, तो तब भी वर्क 0 होता है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. आई थिंक इट्स क्लियर to this point, and inshallah we will discuss some new topics in the upcoming class, and as I have also given you the homework to learn the definition of the work, inshallah we will meet in the next class with the new lecture and new topic. Till then, Allah Hafiz.